So, what has life asked you to unlearn? Life asked me to unlearn people coming, meeting, you have to give them respect. It is so important. Everyone has element of God in them. If you insult someone, means you are insulting the God. If you avoid someone, you are avoiding the God. Because everyone has got touch of God in it. Heart सबके अंदर है, फीलिंग सबके अंदर है. हमारे पास वो राइट नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें. लाइफ हमको ये सिखाती है और यही हम चाहते हैं कि इस चीज को सब लोग सीखें और अपनी लाइफ को सुंदर बनाएं. Beautiful, sir. I am so grateful. Thank you for this. Really, really. My heart is touched. So, was there a moment in your life that has broken you, but also rebuilt you? ब्रोकन मोमेंट्स जो होते हैं, इसका मतलब है कि वो आपको वीक कर, तो ऐसे मोमेंट्स को लाइफ में आने नहीं देना चाहिए जो आपको वीक करे. आप तुरंत उससे बाहर निकलिए. अगर आप उन मोमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे, if those moments stays with the life for some more than required time, Yeah. तो आप वीक हो जाएंगे. और इंसान वीक हुआ कि गया. किसकी लाइफ में सुख दुख नहीं आता. Exactly. सुख में बहुत ज्यादा फूलिए नहीं और दुख में बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि ये तो आने वाला है. दुख सुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमान. मान और अपमान में भी बहुत ज्यादा अपने को फूलिए नहीं. मान हो जाए, अपमान हो जाए तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये आने वाली हैं. ये सोच के अपनी लाइफ चलाइए, फिर देखिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. Amazing. Thank you so much, sir. So, the world sees you, your fame. They applaud you, they have reverence for you. But what is the person behind that public image, sir? आप कौन हैं? मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन आदमी हूँ. मुझे जो कुछ भी बनाया है ये डिसिप्लिन में बना है. मैं कभी भी किसी ने मुझे नहीं देखा होगा कि आई मिसबिहेव. लोग पार्टीज में मिसबिहेव करते हैं. हम भी पार्टी में जाते हैं, हम भी मजे करते हैं, पार्टी में खाते पीते हैं, मौज करते हैं, सबसे मिलते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं. मिसबिहेव कभी नहीं करना. ये डिसिप्लिन, सही टाइम से उठना, सही टाइम से तैयार होना, सही वक्त से अपना रियाज करना, रॉन्ग चीज नहीं खाना, सही चीजें खाना, ये सारा कुछ जो है डिसिप्लिन के अंडर आ जाता है, ये उसके बाहर नहीं. तो यही डिसिप्लिन हमने अपने बेटे को सिखाई. माय सन इज 30 years old, he is in न्यूयॉर्क, और वो मेरी तरह का ही है. उसको अपने जैसे ही बनाया कि हर चीज का मजा करो, किसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो. और एक तो इतनी अच्छी लाइन है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे. ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो. अपमान रचयिता का होगा, रचना करोगे ठुकराओगे. सब भगवान ने बनाया है, उसको भोग लो. ये ना हो कि तुमने ये नहीं पहना, वो नहीं पहना, यहाँ नहीं बैठे, वहां नहीं खाए, वो घूमने नहीं गए. ये सारा कुछ ईश्वर ने रचना कर दी है. अगर आप समर्थ हैं, इफ यू आर केपेबल, डू इट. नहीं तो वो कहेगा इसको सब तो मैंने दे दिया, इसने पैसे तिजोरी में ही रखे रहे, घूमने नहीं गया स्विट्जरलैंड. हाँ, सोचता था हर साल कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, फिर सोचता था यार 20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो रहने दो यार, नहीं जाता. तिजोरी में पड़े रहे, इंसान खत्म हो गया. तो Right. अपनी इच्छाएं सब पूरी करो. When I became 70, I'm 72 now, when I became 70, तो मेरे अंदर एक लाइन आई कि जो शेष है वो विशेष है. Hmm. अब जो बाकी है वो बड़ा स्पेशल है. अभी तक जो गया सो गया, अब बहुत स्पेशल है. जी. Because now the moments are more expensive. My जी. seconds, my minutes, my days are more important, very expensive. So I want to
enjoy my everyday like last day of my life. Wow, beautiful. If Beautiful. I open my eyes tomorrow, then I will enjoy tomorrow also. But today I want to enjoy fully because my eyes are open. Wow. So, if I may say that you're a very highly capable, very self sufficient, accomplished person, and you also had a knowledge which has turned into wisdom, and now you're applying it, implementing it. So, do you think that people have to take this long to come there where you are today? That you say that every day is your last working day, as if. So, is it that any young person can also have this thought? Yes, why not? This is very important to inform them, to make them aware. Now younger generation is also becoming spiritual. In India, now bhajan clubbing is started. Bhajan jamming is started. In that evening, they don't drink, they don't smoke. They just hear name of the God and dance. So they have they have realized that the best way to release their stress is taking name of the God and dance. So this is what I'm teaching people from so many years, last 50 years, You're right. You're that right. this stress will not come close to you. If you are dancing it away, throw it away through your dance and just I mean, enjoy your life. yeah, it's not to have a wine party, but a divine party. Divine party will make you happy. Exactly. I'm with you. I'm with you totally. Sir, how do you stay? आपने बोल तो दिया है, but I would still want to put a question if you have to say something different on that. How do you stay so rooted? And where the world, when the world's places so much on, they put you in pedestal also sometime, and they drop you also, but you stay rooted. So, and I spoke to you, I told you in the beginning only, you are known for your humility and your grounded nature. So, how do you stay rooted? Is there anything you could tell even a young person who's listening to you that could be an inspiration? Everyone has got a chip in the body, and that chip is making you sing, making you dance, making you stand, making you walking, making you working. When that chip goes out, people start saying the person is dead. Now value that chip. Understand the value of that chip. That small chip is the God, is the superpower. Till that stays in your body, you're fine. So be humble. Don't show attitude because that God will not like it. That I am giving him all this and he's behaving like this. He will not be happy. So if you want to live happily, long life, and people give you respect, people love you, then be rooted, be simple, and be respectful to the power which is giving you everything in life.